Hello everyone. Good evening all of you. ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ସକାଳେ ହେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ସେଟା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଏବେ ବି କ୍ଲାସଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ କରିବା ନା, କ୍ଲାସଟା ଟିକେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି କରିବା, ସରେଇବା ଜଲ୍ଦି, ଟିକେ କାମ ଟିକେ ଅଛି ଯେହେତୁ। ଓକେ ଏଭରିବଡି, ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଟୁ ଆମର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ ହେଲା। ତା ଆଗରୁ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ କେବଳ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଓକେ ओके चल आरंभ करें क्लास टू है ना। देखो which part of Indian Constitution are the DPSP? Okay, directive principal of देखो आज क्लास हम completely polity based रहो, completely polity ऊपर आधार रहो, polity है ना, polity रहो, तो समस्त ता प्रति आंसर दियो है ना। देखो which part of the Indian Constitution are DPSP कवर, DPSP हमर केते नंबर ऑफ पार्ट रे अछि, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी केते नंबर पार्ट रे हमर अछि। ओके दैट इज इन आर्टिकल पार्ट 4 है ना, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके पार्ट 4 तापर देखो द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्री। ओके को कंट्री रो डीपीएसपी टाको हमें आनी चले बोरो करिछो को कंट्री, डीपीएसपी टाको हमें को कंट्री रो बोरो कर जाऊ फॉर फादर्स जो मान थिले को जगह रो से माने बोरो करथिले, यूएसए, आयरलैंड, यूके, कनाडा। ओके देखो राइट आंसर टी जदी हम देखो ए जगह कोन राइट आंसर टी रहबो हमर आयरलैंड। ओके आयरलैंड जोडा आयरलैंड को आजो। ओके आयरिश जोडा को आजो। तापर देखो what is the prime purpose of DPSP है ना, DPSP रो prime purpose कौन रोचे देखरे, ensure fundamental rights to guide state policy making, social and economic welfare, define the power of judiciary, establish a structure in government। ओके कौन राइट आंसर इस जगह देखो, राइट आंसर देखो कि टू गाइड द स्टेट पॉलिसी इन मेकिंग सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके राइट आंसर ऑप्शन डी रहबो। तब which article of Indian Constitution contain the DPSP है ना, को केते नंबर आर्टिकल आशीष वेरी गुड इवनिंग है ना। देखो केते नंबर आर्टिकल हमर दर्शाउची कि डीपीएसपी तो केते रु केते आर्टिकल 12 35 35 36 टू 51 51 ए टू 76 245 टू 255। ओके ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी रहो राइट आंसर आर्टिकल 36 टू 51। ओके आर्टिकल 36 टू 51। ओके तापर देखो डीपीएसपी justiciable nature, non-justiciable nature, enforceable by the court, binding on the state। Okay कौन रहो राइट आंसर यारो आशीष है ना, इफ यू नो देन गेट गिव मी द आंसर है ना। देखो डीपीएसपी रो मुख्य उद्देश्य कौन हो से जगह। ओके डीपीएसपी रो मुख्य उद्देश्य रो से जगह नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ओके इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ओके इट इज नॉन जस्टिसेबल नॉट आउट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है ना, हे परियो नॉन जस्टिसेबल हो, ऑप्शन बी हो राइट आंसर ना। which article directs the state to promote to the welfare of the people। Okay
Which article direct the state to promote the welfare of people by securing social order? 36 38 39 40 36 38 39 ओके राइट आंसर कौन होबे जगह आशीष कौन होबे राइट आंसर जो जान आंसर दो चेष्टा करो व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर द राइट आंसर है ऑप्शन 38 आर्टिकल आर्टिकल 38 हो आर्टिकल 38 हो ना तापर देखो व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द डीपीएसपी प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ओके केतरो आर्टिकल दर्शाउची द डीपीएसपी प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड equal justice and free legal aid okay कितना आर्टिकल 39 39 a 41 42 नो सर माने माने नो सर कौन कहलो बुझियलानी एक्सप्लेन प्लीज एक्सप्लेन नो सर माने क्वेश्चन बोलते ना आंसर बोलतेला ना ଆଉ कोन थिला बोली कोच no right answer कोन रो equal justice and free legal aid कितना नंबर आर्टिकल रासे आर्टिकल 39A okay आर्टिकल 39A रासे okay the concept of uniform civil code है ना uniform civil code ता कितना नंबर मेंशन है जे आर्टिकल 42 43 44 45 हां देखो जो राइट आंसर ता रहयो है आर्टिकल 44 हो राइट आंसर है ना आर्टिकल 44 राइट आंसर ऑप्शन हो ना आज छोटिया क्लास रो यार टी छोटो क्लास रो टी समय रो विडंबना जेतु মানে ছোট ক্লাস রে তো সমস্ত টিকে কোঅপারেট করো है ना which article direct state to recognize the village panchayat है village panchayat ভিতরে কত নম্বর आर्टिकल আছে which direct to state organize the village panchayat ओके स्टेट को डायरेक्ट করছি কি স্টেট को দর্শাউছি কি সে জায়গার ଗୋଟେ ভিলেজ পঞ্চায়েতর আবশ্যক কত নম্বর आर्टिकल 38 40 42 64 ओके কোন रहबो राइट आंसर है the right answer article 40 रहबो article 40 is the right answer okay तापर देखो which article emphasize on the promotion of promotion of educational and economical in sectors interest of scheduled castes and scheduled tribes and other weaker section okay कौन रहेगा right answer the article emphasize the promotion of educational and economic interest scheduled caste and scheduled tribe में economically and educationally कोटे पर empowered है पे से weaker section मानो केत नंबर आर्टिकल ऊपर एटा दर्शन दर्शो जो केत नंबर आर्टिकल एटा को आर्टिकल 46 ओके आर्टिकल 46 इज द राइट आंसर है ना तापर देखो व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस ओके देखो को आर्टिकल दर्शो कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स यो प्लेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस ओके 47 48 49 50 केत नंबर आर्टिकल अनुसार एटा दर्शो ओके राइट आंसर देखिए आर्टिकल 49 है आर्टिकल 49 से जगह एटा दर्शाउची ओके तापर देखो द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन अ डायरेक्ट अंडर व्हिच आर्टिकल ओके आर्टिकल केते रे देखिबा कि जोडा कि सेपरेशन ऑफ पावर जदी जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव देखे आर्टिकल 50 ऑफ राइट आंसर है ना आर्टिकल 50 ऑफ राइट आंसर ओके आर्टिकल 50 तापर देखो कि व्हिच आर्टिकल प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ओके आर्टिकल देखो व्हिच आर्टिकल प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 48 49 50 51 हां कौन है राइट आंसर व्हिच आर्टिकल प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को आर्टिकल दर्शाउ सेटा देखो ये क्वेश्चन गुडा माध्यम तमरा आर्टिकल गुडा भी क्लियर होची है ना तो सीरीज वाइज आर्टिकल जाको क्लियर हो जति सेटा हो मोर लक्ष्य कि तमरा आर्टिकल देखो क्लियर हो ना देखो आर्टिकल 51 इज राइट आंसर 51 आर्टिकल इज राइट आंसर है ना तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी ओके जो देखो व्हिच द सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी व्हाट इज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी यूनिफॉर्म सिविल कोड इक्वल पे इक्वल वर्क एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स कौन रहेगा राइट आंसर इस जगह रे आशीष तो राइट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज द राइट आंसर है ना तापर देखो डीपीएसपी एम टू एस्टैब्लिश डीपीएसपी रो मूल लक्ष्य कोन होची एस्टैब्लिश को वेलफेयर स्टेट पोलिस स्टेट कैपिटलिस्ट स्टेट थियोक्रेटिक स्टेट ओके कौन रहेगा राइट आंसर ऑप्शन ने ऑब्वियसली वेलफेयर स्टेट वो डीपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस रो मुख्य लक्ष्य होची कोन वेलफेयर स्टेट है ना वेलफेयर स्टेट है ना सेटा को बजाय रखियो ओके तापर देखो कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वाज एडॉप्ट फ्रॉम व्हिच कंट्री देखो इंडिया रे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अछि को कंट्री रो हम एडॉप्ट करछे द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओके को कंट्री रो हम एडॉप्ट करछे कनाडा यूके यूएस जर्मनी ओके कौन रहबो आशीष यूके वेरी गुड
यूनाइटेड किंगडम रो आमे एक्सेप्ट करते पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओके यूके जोड़ा कि यूके को जाला यूनाइटेड किंगडम द आइडिया ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विच लॉन्ग सेंटर स्ट्रांग सेंटर एंड इन्फ्लुएंस बाय द व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ओके स्ट्रांग सेंटर ओके जोड़ा कि हम कोन कहया कि हम कोइ परबा हम कोन कोइ परबा जे अरे बढ़िया रकम था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हला तापर जो फेडरल स्ट्रक्चर कोड आनी चा मेडल स्ट्रांग सेंटर यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड ओके राइट आंसर कौन रहो कनाडा रो आनी चला ऑप्शन बी है वो कनाडा रो हमें डिराइव करछे ओके कनाडा रो हमें डिराइव करछे द कांसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री द कांसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ कांसेप्ट हम को जगह रो डिराइव करछे को कंट्री रोला रूल ऑफ लॉ मन रखे तो रूल ऑफ लॉ कांसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वी आर डिराइव फ्रॉम व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री ओके यूएसए यूके फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया हला रूल ऑफ लॉ आम को जगह एक्सेप्ट डिराइव करछे आनीचे को जगह आनीचे रूल ऑफ लॉ देखो राइट आंसर हो यूके है ना यूके रो हमें डिराइव करछे ओके तापर देखो द provision for the suspension of fundamental right during an emergency was inspired by use of the country German Weimar Weimar constitution USA and then देखिए Ireland and Canada देखो राइट आंसर पर्सन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग इमरजेंसी समय रे फंडामेंटल राइट रो सस्पेंशन हबो आमे को जगह रो आनिचे सेटा को मन रखिदा जर्मनी रो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी रो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन रो आमे आनिचे ओके तापर देखो द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट ओके कंकरेंट लिस्ट जो आइडिया ऑफ हम तीनटा लिस्ट अछि स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है ना जिंदी यूनियन लिस्ट रे कोन आछे कंकरेंट लिस्ट रे कोन आछे स्टेट लिस्ट रे जा से जोटा डिजन तक भीतर आछन सेटा डायरेक्ट कंकरेंट लिस्ट आछे हला सेटा तो कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जगह हम आनछे ऑस्ट्रेलिया रो ओके ऑस्ट्रेलिया रो हम डिराइव करछे राइट ऑस्ट्रेलिया रो आनछे हला तापर देखा द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन procedure for amendment of the constitution was influenced by use of the country है ना the procedure for the amendment of constitution constitution was influenced by use of country USA South Africa UK Canada साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली देखो साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर है ना अब बताओ द कांसेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है ना रिपब्लिक एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया वाज इंस्पायर्ड विच ऑफ द कंट्री है कौन रहेगा द कांसेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट रिपब्लिक एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय व्हिच ऑफ द कंट्री फ्रांस यूएस आयरलैंड किंगडम यूके ओके को जगह हम जाने पाइबा को जगह हम जाने पाइबा ओके देखो राइट आंसर रहेगा एडारो फ्रांस ओके फ्रांस होगा राइट आंसर है The provision for fundamental duties in the constitution was inspired देखो fundamental duty टा fundamental duty हमें को जगह रो डिराइव करछे हैला को कौन जगह यूएसए यूएसएसआर यूके कनाडा कौन रहेगा राइट आंसर यार सोवियत यूनियन जोड़ा कि से समय यूएसएसआर को से जगह ओके ऑप्शन बी हैला तापर देखो the concept of bicameral legislature in Indian was influenced देखो जो concept of bicameral legislature हमें को जगह आनी चला को कंट्री रो आनी यूएसए यूके आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ओके को जगह आनी bicameral legislature हमें को जगह रो डिराइव करते यूके रो वाला ऑप्शन बी हो वाला तब तो आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है ना the idea of single citizenship Indian constitution was derived from which country सिंगल सिटीजनशिप हम को जगह डिराइव करते कनाडा यूएसए यूके एंड आयरलैंड ओके कौन रहेगा राइट आंसर यार यूके होगा राइट आंसर यूके इज द राइट आंसर है तापर देखो द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरो फ्रॉम व्हिच कंट्री देखो कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू रो कांसेप्ट हम को जगह हम बोरो करते को कंट्री रो बोरो करते यूएसए यूके है ना आयरलैंड एंड देखिए फ्रांस है ना यूएसए यूके आयरलैंड एंड फ्रांस को जगह हमें बोरो करते जुडिशियल रिव्यू ओके तो जुडिशियल रिव्यू हमें बोरो करछे यूएसए रे यूएसए रे हम जुडिशियल रिव्यू को बोरो करछे ला तापर देखो the provision of the independence of judiciary was influenced by which country कौन होजी the independence of judiciary influenced by independent judiciary रो independence है ना काली मतो क्लास करली कि काली सकाळे है ना 11टा क्लास करली जुडिशियरी ओटे इंडिपेंडेंट बॉडी है ना एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी आर्टिकल 50 से अलग करे तो को कंट्री सेटा आना जाईची राइट आंसर है यूएस है ना यूएसए रहो राइट आंसर है प्रोविजन फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ रेसिडुअरी पावर
vested in the center was inspired by which country? The residual power the vested in the देखो सेंटर स्टेट पाखर जदि कुछ रहला आउ स्टेट पाखर जदि बाहरी आउ को जिंस रहला तो सेटा सेंटर पाखर रहबो तो रेसिडुअल पावर सेंटर पाखर जो रहबो सेटा को कंट्री हम डिराइव कर देखो यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड आ भी को जगह डिराइव करछे राइट आंसर रहबो कनाडा ओके कनाडा ओवर राइट आंसर है ना तापर देखो द कांसेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ओके देखो कांसेप्ट होती लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोर्न फ्रॉम व्हिच कंट्री को कंट्री में लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी टा को हम डिराइव करछे ये ना को यूएसए फ्रांस यूके आयरलैंड ओके देखो या भी तो राइट आंसर जो हम देखा सेटा हबो हमरो फ्रांस है ना फ्रांस द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय ओके देखो इलेक्शन है ना प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन इन प्रेसिडेंट को इलेक्शन दा हबो बोली हमें को जगह रो हमें जानिबा को टाइप रो हमें जानिबा कहलो प्रेसिडेंट को इलेक्शन दा हमें को जगह रो हबो कोन नै सब केम जानिबा को कंट्री रो आस्तिला सेटा जानिबा केम तो राइट आंसर रो आयरलैंड है ना आयरलैंड रो आंसर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ओके द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते थाए लोकसभा रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते 500 550 45 552 ओके इट इज योर होमवर्क समस्त कमेंट बॉक्स रे लिखबो एटा केते थाउ जेटा मु कहबिन राइट आंसर समस्त जानिथिबो कोन बे समस्त आंसर दोनो तो जे समस्त जानितो मु एटा छाडती तम पई हला तापर देखो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा ओके ऑप्शन हला द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा केते अछि राज्यसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ के जगह केते अछि 238 245 250 260 ऑप्शन सी 250 250 okay 250 is the right answer है which article of Indian constitution deal with the establishment of parliament केते नंबर आर्टिकल पार्लियामेंट एस्टैब्लिशमेंट विषय रे दर्शाए 79 80 81 82 कौन रहेगा राइट आंसर आशीष द राइट आंसर ऑफ आर्टिकल 79 ओके आर्टिकल 79 ऑप्शन ए हला तापर देखो द प्रिसाइडेंट ओवर जॉइंट सिटिंग जदि कोन सी पार्लियामेंट जदि जॉइंट सिटिंग चलछि हला तो से जगह किए सेटा को प्रिसाइड किए हेड करबो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा स्पीकर चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस तो हबेनी हला छाड़ो ये तीन भीतर कोन हो राइट आंसर कहलो देखो ये तीन भीतर स्पीकर ऑफ लोकसभा रहबो राइट आंसर ओके स्पीकर ऑफ लोकसभा ओके आशीष तापर देखो थैंक यू एवरीवन देखो आज यार छोटो क्लास दिला बहुत बड़ क्लास कर पले जेतु टी समय विराम है ना थैंक यू आशीष थैंक्स ओके आशीष थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग आवर क्लास ए पीडीएफ टी हमरो टेलीग्राम ग्रुप पाइ ओके टेलीग्राम ग्रुप रे हम पीडीएफ टी पाइ ओके टेलीग्राम ग्रुप हम वीडियो डिस्क्रिप्शन रे चला